डायरेक्ट चालू कर रहा है। The fall. What is God's promise? Sorry, there is a technical issues going on. What is God's promise for Satan at the end of time? Supremacy position of Satan after the fall until today. Then we discuss, is there first, second and third heaven, and in which heaven does Satan rule, and what happened in the Garden of Eden. Question number 11, what was the reason for the flood? Then we discuss what happened to the fallen angels at the flood. Then from Noah's son the whole earth was populated. Nimrod came on the scene and built the Tower of Babel. We discussed why this Tower of Babel was being built by Nimrod. Some of the reasons we discussed with the theological beliefs. Why was Sodom and Gomorrah destroyed? God then sent Moses and the laws were introduced. Now what happened to the body and the soul of the person that died in the Old Testament? We discussed this also. Then we discussed regarding Hades, bottomless pit, Tartarus. We also discussed paradise when we talked about the story which Jesus gave of Lazarus and the rich man. Question number 17,
Could Satan go back into the third heaven after he was thrown out? Yes, we discussed with the example of Job. God asked Satan, from where you have come. God is in the third heaven. Satan also reaches in third heaven. Question number 18. What was his power basis in the Old Testament? We said that his power was dunamicous power. Dunamicous power means unhindered power. Question number 19. The fulfillment of God's trap for Lucifer, the cross. We came with question number 20. What did Jesus tell the righteous man on the cross? Today we are going to start from question number 11. Before we start from question number 11, let's look to this diagram. Okay, it is talking about pre-Adamic world, Garden of Eden, mountain of God, then how Satan was thrown from the mountain of God on the earth, and the earth became chaotic. Then Garden of Eden is being shown, Tower of Babel is being shown. Question number 11, where the prisons of the fallen angel Tartarus. If you see the semicircle which is there is the earth, and under the earth there is paradise, bottomless pit, Sheol, and Tartarus. These are the chambers which we have discussed. Then was the Noah's Ark, and so on we came till the cross. The cross is at the center. Let's remember this diagram. To this diagram we can explain the entire spirit world. Questions for today. We are going to start from question number 21. Where does the New Testament says the paradise is? Where did the body and the soul of the wicked man on the cross go to? What was the reason for Jesus to descend into the underworld? What did Jesus go to take from the bowels of the underworld? The resurrection of Jesus after 3 days. Has Satan got access to God's throne after the resurrection of Jesus Christ? Power of the church. Remember, you are the church. So we are going to discuss from question number 20 to 27. Question number 20 was discussed last time. What did the righteous man, righteous robber, say to Jesus on the cross? And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, today thou shalt be with me in paradise. The righteous robber had said to Jesus Christ that when you go to heaven before your Father, remember me. And Jesus said unto him, Verily I say unto you, today thou shalt be with me in paradise. That means after the death of that robber who believed on Jesus Christ on the cross, Jesus said that today, after your death, your soul shall be in paradise. That means the body will be buried. As we said, before crucifixion, everybody who died, their body was buried in the grave. As Jesus' body was buried in the grave, so this righteous man's body was also buried in the grave. Jesus said, today thou shalt be with me in paradise. That means his soul is going to be in paradise, his spirit is going to be in paradise. Jesus told the righteous man on the cross that today he will be with me in paradise. Very interesting question. Now my question is, on the cross, who died first? Jesus or this robber? This is the question before you today to answer. If you can answer, please put your comment on in the comment box. I hope so the question is clear.
The question is, on the cross, who died first? The robber or Jesus Christ? Remember what Jesus said to the robber, "Today thou shalt be with me in paradise." So who might have died first? Let's go to the next question. Question number 21. Where does the New Testament say paradise is? Now this is very interesting to see. Where the New Testament says the paradise is. This is the paradise when Jesus died on the cross and was resurrected. Matthew 12 verse 40. This is what Jesus had said. For as Jonah was 3 days and 3 nights in the whale of the belly, so shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. That means Jesus was saying that for 3 days and 3 nights, He is going to be in the heart of the earth. We know Jesus told the story of rich man and the Lazarus. And we have to see that. Where is his paradise? And where is this Hades or Sheol? Whether it is under the earth. Jesus had clearly given the statement that 3 days and 3 nights He will be in the heart of the earth. Jesus was in the heart of the earth for 3 days. That is where the paradise was originally is. Ephesians chapter 4 and verse 9. This is the revelation which Paul gave to the church of Ephesians. Now that He ascended, what is it but that He also descended first into the lower parts of the earth? Bible clearly says that before Jesus ascended to heaven, He had descended in the lower parts of the earth. That means when Jesus said, "Today thou shalt be with me in paradise," and Jesus is going to go in the lower parts of the earth, in the hearts of the earth, that very same day, that means He is going to welcome the robber who died on the cross, the thief who died on the cross, and who believed Jesus Christ in the paradise. And that paradise is nowhere but in the heart of the earth. Jesus descended into the lower part of the earth. Where did the body and the soul of the wicked man on the cross go to? We should remember, the body was buried in the grave and his soul went into Hades. The righteous robber who believed Jesus Christ was the first one who could see God's grace and the resurrection power of Jesus. The mercy of Jesus Christ. He was the first one to enter into paradise. Understand that Hades and the lake of fire are two separate places which will be explained later. Question number 23. What was the reason for Jesus to descend into the underworld? 1 Peter chapter 3 verse 18 and 19. For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in flesh, but quickened by the Spirit, by which also He went and preached unto the spirit in prison. Now, which were the spirits in prison? These were the spirits which were there in the underworld. The underworld spirits, right before the crucifixion, the righteous were there in the paradise. They were in the prison. They were locked there. And the unrighteous spirits were in Hades. Bible says, according to 1 Peter chapter 3, 18 and 19, these spirits which were there in the prison, Jesus went to preach them. What do you think Jesus might have preached?
Jesus might have preached the plan of salvation, that he died on the cross for the sins of the world, which was a past, and who believed on him shall be saved. Those righteous spirits which were there in the prison, he preached about him to them. Jesus went to proclaim to the spirits in prison. I told you the first man who was there in this paradise might be Abel. And the last man who might have entered here into this place was the righteous robber. Let's go to the next question. Before that, let's understand. These two verses are extremely difficult to interpret due to the little information given, because nothing is said of the response of the hearers. What did Jesus exactly say in the prison? What did Jesus exactly preach in the prison? This has not been mentioned there. Neither the spirit who heard what was their response. What we know is that the Old Testament said saints lived according to the law. They never knew Jesus Christ. Jesus went to proclaim the fruit of his victory to them, as well as to the fallen angels and the demon spirits locked up in the underworld. The Old Testament saints were kept by Satan in the prison. Remember, Satan had unanimous power. Satan had the prison keys. In other words, all those who were in paradise, and in the Hades, they were confined there by Satan. And those who were in the paradise, who were confined by the Satan, needs to be released. Question number 24. What did Jesus go to take from the bowels of the underworld? यीशु मसीह इस धरती के नीचे क्या लेने गए थे? 3 रात और 3 दिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं पृथ्वी के भीतर जाऊंगा, और वो पृथ्वी के नीचे भाग में उतर आया था. रेवलेशन 1 and verse 18. मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास ही है. Jesus took the keys which was there in the hands of the Satan, the keys of hell and of death. जो सुखलोक और अधोलोक की कुंजियां शैतान के पास में थी, जिसकी वजह से उसके पास यूनानिमस सामर्थ था जिसे कोई रोक नहीं सकता, उस कुंजिया को यीशु मसीह ने ले लिया. इसीलिए यीशु मसीह उस पृथ्वी के नीचे चले गए थे. एक कारण हमने ये भी देखा कि जो अधोलोक में जो संतगण थे, जिनको शैतान ने बंदी बनाकर रख दिया था, उनको जाकर उसने प्रचार किया. और दूसरी बात उसने ये की कि शैतान से वो कुंजियां ले ली जो उसके पास थी, जो अधोलोक और सुखलोक की कुंजियां थी. अब ये सारे कुंजियां यीशु मसीह के पास है. Satan had locked up the souls in the heart of the earth, the righteous one in paradise and the wicked one in Sheol or Hades. Jesus went down to take the keys of death so as to ensure that Satan would not be able to release the wicked soul ever again. They are all destined for the judgment at the great white throne. ये सारे जो दुष्ट लोगों की जो आत्माएं हैं, वो उस अधोलोक में हैं, और वे सारे आत्माओं को खोल दिया जाएगा जब आखिर का न्याय होगा, जिसे हम ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट कहते हैं.
इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय 8 से 10। वेयरफॉर ही सेड, इसलिए वो ये कहता है कि वो ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिया। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल यह कि वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतरा गया ये वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। The one who descended first into the lower parts of the earth, he is the same one who was ascended far above all heavens. ये इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय 8वीं से 10वीं आयत में प्रेरित पौल ने ये प्रकटीकरण इफिसियों कलीसिया को बताया है कि जो यीशु मसीह पृथ्वी के नीचे पहुंचा वही ऊपर गया स्वर्ग में। यशाया उसका 61वां अध्याय 1 से 2। Jesus went down for a second reason, and that was to release the righteous soul. These are the first fruit that were kept captive by the Satan in paradise, and to strip Satan of his power. याद रखना है, पहला रीजन क्या था? वो अधोलोक में इसलिए पहुंचा, सुखलोक में इसलिए पहुंचा ताकि जो बंदी थे उनको सुसमाचार फैलाया जाए, उनको प्रचार किया जाए, यीशु कौन है उनको बताया जाए। दूसरा कारण उनको रिलीज करने के लिए था, और सेटन से उसने कुंजियां ली और सारे लोगों को रिलीज कर दिया जो सुखलोक में शैतान ने बांध कर रखे थे। मत्ती उसका 27वां अध्याय 52 से लेकर 53वीं आयत। उसके बाद क्या हुआ? जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ उस वक्त क्या हुआ? ये जारे जो आत्माएं थी सुखलोक में, और इसकी जो चाबी है शैतान के पास थी, यीशु मसीह ने ले ली और सुखलोक से उन सारे आत्माओं को आजाद कर दिया। वो सारी आत्माएं वो आई और उन्होंने अपने अपने कब्र से अपने अपने शरीर को ले लिया। बाइबल कहती है ये यीशु मसीह के पुनरुत्थान के वक्त हुआ। लोगों ने देखा कि कब्र खुल गई और पवित्र नगर में बहुत से लोग दिखाई दिए, और वे वो तब तक थे जब तक यीशु मसीह स्वर्ग में रवाना नहीं हुए। The exact moment when Jesus blew out his last breath, his spirit was released, and instantly the righteous souls were released from the prison. The righteous souls were resurrected in their new glorified bodies, with which they came out of their graves. याद रखना है, जब यीशु मसीह फिर से एक बार आएंगे वही होगा, कब्र खुलने वाली है। और जो लोग यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद जिनकी मृत्यु हुई है, जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, उनकी आत्माएं जो सीधा स्वर्ग में रवाना हुई वो यीशु मसीह के साथ लौट आएगी और अपने अपने कब्र को खोलकर नए शरीर को लेकर वो फिर से एक बार स्वर्ग की ओर रवाना होंगे। मैं आपको वचनों के द्वारा दिखाने वाला हूं। पहला पेत्र 3 अध्याय 19वीं आयत ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। The flood occurred 2319 years BC. The victory of Jesus over Satan was proclaimed 2352 years later in the underworld. अगर आप माइनस करेंगे तो आपको दिखेगा 33 years यीशु मसीह का जो इस पृथ्वी पर थे। The spirit of those who were disobedient was still there. They were not only there in the underworld for a short period to be purged, they are still captives there because they cannot escape and are thus waiting for their ultimate judgment. Resurrection of Jesus after third day. He that descended is the same also that ascended up far above all the heavens. देखिए
यीशु मसीह स्वर्ग की ओर रवाना हो रहे हैं। अपोस्तल पौल ने जब एफिसियों से ये कहा, वो यीशु मसीह के बारे में कह रहे थे। जब यीशु मसीह स्वर्ग की ओर रवाना हुए, when Jesus ascended on high, he let the captives free, meaning Jesus took the righteous soul with him for him. अभी जितने सारे जो लोग हैं जो उस वक्त सुखलोक में थे, जिन्होंने मूसा के नियमों को पालन किया था, जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता थे, वे सारे अब यीशु मसीह के साथ स्वर्ग की ओर रवाना हुए। It's not changing. One Peter 3:22, who is gone into heaven and is on the right hand of God, angels and the authorities and powers being made subject unto him. मार्क 16:19वीं आयत, निदान प्रभु यीशु ने उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। अब यीशु मसीह कहां पर है? वो तीसरे स्वर्ग में है, हम उसे देखेंगे, और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। चालीसवां, God stripped Satan's power, and all the angels, authorities and powers were made subject to Jesus Christ. Satan's power's base after the cross was changed from dunamis to exousia power, meaning only what the Holy Spirit allows him to have, Satan's head is now bruised. मतलब क्या हुआ? पुनरुत्थान के बाद शैतान का जो वो dunamis पावर था वो अब चला गया, अब वो एक्सोशिया पावर बन गया, क्योंकि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद पवित्र आत्मा इस पृथ्वी के ऊपर आया, और पवित्र आत्मा आज शैतान को वो सामर्थ्य वो नहीं कर सकता, उसको रोकने वाला पवित्र आत्मा है। Has Satan got access to God's throne after resurrection of Jesus Christ? Revelation 12 and verse 10. And I heard a loud voice saying in heaven, now is come salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ. For the accuser of our brethren is cast down, which accused them before our God day and night. फिर मैंने स्वर्ग पर से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना कि अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने हैं, उन पर दोष लगाया करता था, गिर गया है। आइए हम अगले वचनों की ओर जाएं। Satan is accusing us day and night before God. He still has access. आज भी शैतान तीसरे स्वर्ग में आकर भाइयों को दोष लगाता है। वहां पर यीशु मसीह है जो हमारा एडवोकेट है, जो हमारे लिए परमेश्वर के सामने विनती करता है। रोमियो की किताब उसका 8वां अध्याय की 34। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वो है जो मर गया वरन मुर्दों में से भी जी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर और हमारे लिए निवेदन भी करता है। वो सिर्फ परमेश्वर की दाहिनी ओर नहीं बैठा, वो हमारे लिए निवेदन भी करता है। Jesus is now interceding for us. Jesus intercedes on our behalf. 1 John 2 verse 1 and 2. हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है,
अर्थात धार्मिक यीशु मसीह, और वही हमारे पापों की प्रायश्चित है, और वो केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। याद रखना है, वो हमारा एडवोकेट है, वो हमारे लिए विनती करता है। जीसस इज आवर एडवोकेट एट द फादर। तीतुस उसका दूसरा अध्याय, इसकी 3री आयत। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियां का चाल चलन पवित्र लोगों साहो, दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, और अच्छी बातें सिखाने वाली हो। द वर्ड स्लैंडरर हियर in this verse means equivalent to the devil. No wonder lying is one of the 7 sins that God hates, which is mentioned in Proverbs 6 verse 16 and 19. आइए हम 27वें प्रश्न की ओर जाएं। पावर ऑफ द चर्च, रिमेंबर यू आर द चर्च। मत्ती 16 उसकी 28वीं आयत। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल न होंगे। ये अधोलोक के फाटक कौन है? ये शैतान का सामर्थ्य है। याद रखना है प्रियो, यीशु मसीह ने कहा कि कलीसिया की स्थापना मैं करूंगा, और कलीसिया शैतान के खिलाफ खड़ी होगी, और शैतान का सामर्थ्य कलीसिया के ऊपर प्रबल न होगा। क्या आप कलीसिया के भाग है? ये व्यक्ति के लिए नहीं दिया गया, ये बातें जो है कलीसिया के लिखी गई है। पवित्र आत्मा कलीसिया के लिए दिया गया है। बाइबल कहती है पुनरुत्थान के पहले शैतान के पास वो सामर्थ था जिसको डिनानिमस सामर्थ कहते हैं, जिसके खिलाफ कोई नहीं आ सकता था। इसलिए परमेश्वर ने खुद अय्यूब के वक्त ये बातें बताई कि देख भाई तू सब कुछ कर, लेकिन अय्यूब की जान नहीं लेना। इतना सामर्थ शैतान के पास था, लेकिन अब उसका सामर्थ डिनानिमस से निकलकर एक्सोशिया बन गया। अब कलीसिया और पवित्र आत्मा उसके खिलाफ खड़ा हो सकता है। इसलिए प्रियो, जब जब आपको संकट आए और आप प्रार्थना करते और आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं होता, शैतान की ताकत आपके खिलाफ खड़ी होती है, तो कृपया कलीसिया को कहना प्रार्थना करें। आप और हम कलीसिया हैं। यू विल हैव द पावर ओवर सेटन एंड हिज इविल फोर्सेस। यही परमेश्वर का वचन कहता है। देखिए, हमने अभी तक इतने सारे सवालों का जवाब दिया है। इस भाग 4 में हमने क्या सीखा? इस भाग 4 में हमने ये सीखा कि ये जो अधोलोक है, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के पहले ये पृथ्वी के नीचे था। वो जो धर्मी चोर था जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मसीह ने कहा कि तू आज मेरे साथ अधोलोक में होगा। मतलब वो जो अधोलोक पृथ्वी के नीचे कैसा था, हमको कैसे पता चला? क्योंकि एफिसी किताब में लिखा है, यीशु मसीह ने खुद कहा जैसे योना मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात था, वैसा मनुष्य का पुत्र पृथ्वी के पेट में 3 दिन और 3 रात रहेगा। इसलिए प्रेरित पौल ने कहा एफिसी को किताब में कि जो स्वर्ग में उठा लिया गया उसके पहले वो पृथ्वी के नीचे गया था। हमने देखा यीशु मसीह पृथ्वी के नीचे क्यों गए। इसका मूल कारण ये है कि ये जो बंदी गृह में जो लोग थे, जिनको शैतान ने बंदी बनाकर रखा था, जो सुखलोक में थे, उनको यीशु मसीह कौन है पता नहीं था। उनको प्रचार करने के लिए हमने वचनों को देखा। उसने जाके उन बंदी आत्माओं को प्रचार किया, और उसके बाद दूसरा काम यीशु मसीह ने यह किया कि शैतान के हाथ से वो चाबी ले ली और उस बंदी आत्माओं को खोल दिया। बाइबल कहती है जिस वक्त यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ
उस वक्त ये जो सारे जो धर्मी लोग थे जिनके कब्र इस पृथ्वी पर थे, वे सारी आत्माएं बाहर आ गई और उन्होंने अपने अपने जाकर उस कब्र खुल गई उनकी और उन्होंने उस अपने शरीर को प्रदान कर लिया जो इमॉर्टल शरीर था। और ये सारे लोग यीशु मसीह के पास स्वर्ग में रवाना हो गए। बाइबल कहता है पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह सिंहासन के, परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जाकर बैठे। क्या पुनरुत्थान के बाद शैतान उस तीसरे स्वर्ग में जा सकता है? हाँ, जा सकता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि आज भी वो जो यीशु मसीह में विश्वास करते हैं उन भाइयों के ऊपर दोष लगाता है परमेश्वर के सामने, और यीशु मसीह हमारे लिए निवेदन करता है, हमारा एडवोकेट है वो। ये जो लोग हैं जिन्होंने मूसा पर विश्वास नहीं किया, उसके नियमों पर विश्वास नहीं किया, उनके सारे आत्माएं उस अधोलोक में आज भी बंद हैं और वो उसी वक्त खोले दिए जाएंगे जब अंत का न्याय होगा, जिसे ग्रेट व्हाइट थ्रोन जजमेंट कहते हैं। अब हमें ये याद रखना है कि यीशु मसीह के साथ अब ऑलरेडी लोग हैं, और पुनरुत्थान के बाद जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और जिनकी मृत्यु हो गई, वे सारे लोग अब अधोलोक में नहीं, मतलब पृथ्वी के नीचे के सुखलोक में नहीं जाते, लेकिन उनकी आत्माएं उस तीसरे स्वर्ग में जाती हैं जहां पर यीशु मसीह विराजमान है। प्रियो, हमने आज के जो सवालों को देखा है वो ये सवाल है, नया करार क्या कहती है? सुखलोक कहां था पुनरुत्थान के पहले? यीशु मसीह के कारण क्या थे पृथ्वी के नीचे जाने के? उसने पृथ्वी के नीचे जाकर क्या किया? क्या शैतान आज भी पुनरुत्थान के बाद स्वर्ग में जा सकता है? हाँ, हमने देखा कलीसिया का सामर्थ्य क्या है। याद रखना है प्रियो, कलीसिया के पास आज वो सामर्थ्य है जो शैतान को रोक सकती है। यीशु मसीह ने कहा कि अधोलोक के फाटक उसके ऊपर प्रबल ना होंगे। इसीलिए जब तक कलीसिया उठा लिए नहीं जाएगी तब तक सताव का काल नहीं आएगा। जल्दी समय आएगा जब यीशु मसीह फिर से एक बार बादलों पर आएंगे और कलीसिया उठा ली जाएगी। इसके विषय में हम जरूर सीखने वाले हैं और इसे हम पार्ट 5 में देखेंगे। मुझे लगता है कि आज हमने स्पिरिट वर्ल्ड के द्वारा पवित्र शास्त्र में उत्पत्ति से लेकर प्रगटीकरण तक जो परमेश्वर का जो मिशन है उसको हमने देखा है। शैतान का अंत कैसा होगा ये उत्पत्ति से लेकर प्रगटीकरण पे है। मनुष्य का उद्धार कैसे होगा ये उत्पत्ति से लेकर प्रगटीकरण तक है। यही थीम है बाइबल की। हमें देखना है कि शैतान का नाश कैसे होने वाला है। अब तक जो हमने पढ़ा ये हमारा भूतकाल था। अभी से जो हम देखने वाले हैं वो उन बातों को देखेंगे जो बातें अभी कलीसिया के साथ हो रही है। देखिए, अब हम जो पहुंचे हैं वो यहां तक पहुंचे। क्रूस के पुनरुत्थान के बाद कलीसिया की स्थापना हुई। यहां पर हम पहुंचे हैं। आपको कलीसिया दिख रहा है डायग्राम में? वहां तक हम पहुंचे हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको मेरे ये जो वचन है समझे होंगे। मैं ये विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा आपको के ऊपर अभिषेक करे और आपको ज्ञान और बुद्धि से भर दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं उन सारे लोगों के लिए
जिन्होंने प्रभु आज हमारा बाइबल स्टडी में प्रभु जिन्होंने अध्ययन किया, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, अगर वो ये देख रहे हैं तो उनको प्रभु तू प्रकाशित वाक्य दे, उनको बता कि यीशु मसीह के बिना वो स्वर्ग में नहीं जा सकते। हमें सिर्फ इतना विश्वास करना है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे और तीसरे दिन जिलाए गए। पिता परमेश्वर ये प्रकटीकरण उन सारे लोगों तक पहुंचा। हर एक व्यक्ति जो कलीसिया में नहीं जाता हो, पिता परमेश्वर उसको कलीसिया का बोझ दे, प्रकटीकरण दे, क्योंकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य सिर्फ कलीसिया के पास है और कलीसिया ही शैतान के विरुद्ध खड़ी हो सकती है। इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु हम सबके ऊपर तेरा अभिषेक मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुना कबूल कर, आमीन। आइए हम अगला भाग जो है अगले शुक्रवार को देखेंगे और तब शैतान के अंत को देखने वाला है। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।